हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम न्यूक्लियाई चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, द हाफ लाइफ ऑफ AU 198 इज 2.7 days। द एक्टिविटी ऑफ सैंपल 1 माइक्रोग्राम ऑफ AU 198 इज 0.244 Curie, 0.040 Curie, 0.500 Curie, 0.295 Curie. Question number 2. Radioactive I-131 has a half-life of 8 days. A sample containing I-131 has activity to 20 microcurie at T0. Its activity at T is 400 is 4 microcurie, 23 microcurie, 29.5 microcurie, 14.14 microcurie. Question number 3. A certain sample of radioactive material decays at the rate of 500 per second at certain time. The count rate falls to 200 per second at 50 minutes. The decay constant of the sample is 1.05 into 10 to the power minus 4, 0.05 into 10 to the power minus 4, 5.5 into 10 to the power minus 4, 9.1 into 10 to the power minus 4 per second. Question number 4. The count rate from a radioactive sample falls from 4 into 10 to the power 6 per second to 1 into 10 to the power 6 per second in 20 hours. What will be the count rate at 100 hours after beginning? 3.9 into 10 to the power 4 per second, 5.1 into 10 to the power 4 per second, 3.9 into 10 to the power minus 3 per second, 5.1 into 10 to the power 3 per second. Now solution. Question number 1. The half-life of AU 198 is 2.7 days. The activity of the sample 1 microgram of AU 198 is 0.244 Curie, 0.040 Curie, 0.500 Curie, 0.295 Curie. Half-life T is equal to 2.7 days और डेज को कन्वर्ट अगर सेकंड में कर दें 2.7 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड. मास ऑफ सैंपल अगर m है तो 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ AU इज इक्वल टू 198 ग्राम. तो 198 ग्राम में जो न्यूक्लियाई होंगे, एटम्स होंगे, वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम विल बी 10 to the power minus 6 divided by gram atomic mass 198 into Avogadro number 633 10 to the power 17 by 33. T is 2.7 into 24 into 3600 second. Decay constant lambda 0.693 by half life, 0.693 by 2.7 into 24 into 3600. Activity R is lambda into n. Lambda is 0.693 by 2.7 into 24 into 3600 into n 10 to the power 17 by 33. This integration
per second. 1 Ci curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. तो R की वैल्यू इन क्यूरी हो जाएगी 0.693 इंटू 10 टू द पावर 17 बाई 2.7 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू 33 इंटू 3.7 इंटू 10 to the power 10. This comes 0.244 क्यूरी. तो जो एक्टिविटी होगी वो होगी 0.244 क्यूरी. ए इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द radioactive I-131 has a half-life 8 days. A sample containing I-131 has activity 20 microcurie at T is 0. Its activity at T is 4 days is 4 microcurie, 23 microcurie, 29.5 microcurie, 14 microcurie. हाफ लाइफ अगर कैपिटल से डिनोट करें इज इक्वल टू 8 days. दिस इज रेडियो एक्टिविटी एज 0 टाइम 20 माइक्रोक्यूरी. और अगर टी पर इज R1 एक्टिविटी तो R1 बाई R0 इज हाफ टी बाई हाफ लाइफ T. R1 by 20 is equal to 1 by 2. T time is 4 and capital T is 8. 1 by 2 की पावर 1 by 2 और 1 by रूट 2. इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 by 2. तो R1 is equal to 20 into रूट 2 by 2 10 रूट 2. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, 14.14 माइक्रोक्यूरी और अप्रोक्सीमेट 14 माइक्रोक्यूरी. जो एक्टिविटी होगी वो होगी 14 माइक्रोक्यूरी. डी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. A certain sample of radioactive material decays at rate of 500 per second at a certain time. The count rate falls to 200 per second at 50 minutes. The decay constant of the sample is 1.05 into 10 to the power minus 4, 3.05 into 10 to the power minus 4, 5.5 into 10 to the power minus 4, 9.1 into 10 to the power minus 4. Suppose this is at R0 500 और R1 at 50 second is 50 minutes. T is 50 मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकेंड में 6300 सेकेंड 3000 seconds. लैम्डा डीके कांस्टेंट लैम्डा R1 by R0 is equal to E की पावर माइनस लैम्डा टी. R1 200 by 500 is equal to E की पावर और
सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1 बाई R0 इज इक्वल टू हाफ T बाई half life, capital T, this is T is half life, 200 by 500 is equal to half T is 3000 by T. 2 by 5 is equal to 2 की पावर 3000 by T, और 3000 by T is equal to 5 by 2, और इसको लिख सकते हैं 10 by 4, और 10 by 2 की पावर 2, 3000 by T. बोथ साइड log ले दें, log at base 10, बोथ साइड log लेंगे तो log base 10 to 3000 by T is equal to log base 10 by 2 का स्क्वायर. 3000 by T log 10 base 2 is log 10 minus log 2 का स्क्वायर base 10. 3000 by T log 2 3.01, this is 1 minus 2 log 2 10. 1 minus 2 into 0.301, 1 minus 0.602, 893, 0. 1 by T is equal to 0.398 by 3000 into 0.301, or 398 by 3000 into 3101. लैम्डा की वैल्यू होती है 0.693 बाई टी, तो 0.693 इंटू 398 बाई 3000 इंटू 301. This comes to be 3.05 into 10 to the power minus 4. Lambda की वैल्यू 3.05 into 10 to the power minus 4. This B is correct option. Question number 4. The count rate from a radioactive sample falls from 4 into 10 to the power 6 per second to 1 into 10 to the power 6 per second in 20 hours. What will be the count rate 100 hours after the beginning? 3.9 into 10 to the power 4, 5.1 into 10 to the power 4, 3.9 into 10 to the power 3, 5.1 into 10 to the power 3 per second. Count rate at 0 time, this is suppose R1 and
at 100, this is R2. So R1 by R0 is equal to half T by half time. Half life T. R1 is 1 into 10 to the power 6, or this is R 10 to the power 6 is equal to half T की small t की वैल्यू 20 आवर्स बाई हाफ लाइफ, और 1/4 is equal to 1/2 20 by t, equation number 1. Similarly, R2 by R0, R2 by R0 is equal to half T1 by T, or T1 is given as 100 by T. R2 by 4, R0 की वैल्यू है 4 into 10 to the power 6, इसको हम लिख सकते हैं हाफ की पावर 20 by t और होल टू द पावर 5. From equation 20 by 2, from equation number 1, this figure is 1/4. तो 1/4 की पावर 5 और 1/4 की पावर 5. तो R2 is equal to 4 into 10 to the power 6 by 4 की पावर 5. एक पावर 4, 10 to the power 6 by 4 की पावर 4. इसको 200 into 100 into 100 by 4 into 4 into 4 into 4. 25, 25, 625, 00 by 16. चार, एक 5, 16 नंबर 144. Approximately 3900 or 3.9 into 10 to the power 3. 3.9 into 10 to the power 3. This C is correct option.